In the meantime, पारुल, कविता, शीतल एंड शिवानी, आप लोग हिंदी में बात करना चाहेंगे कि इंग्लिश इंग्लिश में बता दीजिए, चैट पे बता दीजिए, ऐसे अनम्यूट करके बता दीजिए। Piyush, I just had a talk with Divya. I've told her to join in. Okay, we'll wait for that. पारुल, कविता, शिवानी, शीतल, बताइए आप हिंदी में चाहेंगे कि इंग्लिश में? अनम्यूट करके बता दीजिए, घबराइए नहीं। शीतला के लिए वेट कर रहे हैं, फिर चालू करते हैं हम। दिव्या के लिए, सॉरी, दिव्या के लिए यार। हाँ शिवानी जी, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी सर, हिंदी इंग्लिश बोथ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके। इट्स 5 और 6। स्टार्ट करते हैं महामाया जी। Yes, Piyush, I think. Let's just start. शिवानी जी, अगर आप अपना वीडियो रखना चाहे तो रख सकती हैं। थैंक यू सो मच। Okay, great. So good evening again to all of you. We are really very fortunate that Shivani ji has agreed to take this session. And to begin with, I just would like to introduce her to everyone. Currently, Shivani ji is working at Theok Civil Hospital, Shimla, as a nursing officer, and this was the station given to her as a posting following her successful completion of the HPSSC nursing exam. Before this, she has worked with Maharshi Markandeshwar University at Solan as a nursing tutor at MM College of Nursing, as also at Shimla Nursing College at Shururala, Shimla. I hope I pronounced it correctly, Shururala. She has also worked as a clinical instructor at Shivalik Institute of Nursing after her graduation. And she has done BSc Nursing as well as MSc Nursing in Medical Surgical Nursing from Shivalik Institute of Nursing. And this is not all. Apart from her professional engagements as in the profession of nursing, she has also worked as content developer with CBS Publisher Delhi. And she has to her credit about 10 research papers in national, international nursing journals. So we are, like I said, we are really fortunate to have her here. And let's make the full use of the opportunity, because she is the one who has just cleared HPSSC in 2021, which is not too far back. So with that, I'll hand it over to Shivani ji, and it is a very informal session. She will talk through initially about how her experience has been and how she prepared. मैं हिंदी में बोलता हूँ, सॉरी, इंग्लिश में चल रहा था मैं। तो शुरू में शिवानी जी आपसे बात करेंगी कि HPSSC एग्जाम में उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी थी और कैसे पास आउट, और फिर ये इनफॉर्मल सेशन है, आप लोगों को जो भी पूछना है खुल के पूछिए, ठीक है? विद दैट आई विल हैंड ओवर टू शिवानी जी। थैंक यू। Thank you so much, sir. And I think this session is possible only because of Namita ma'am, Mahamaya ma'am, and you, sir. So thank you, first of all, for giving me this opportunity that I'm interacting with the students.
And I think lastly, in the classes session only I had interacted with the students. तो अब मुझे I guess एक साल बाद मौका मिला है बच्चों से interact करने का. So I'm really happy for this kind of opportunity. And I'll try my best to give the best guidance possible to all the students who have joined with us in this session. And I would say that everyone, every student, just feel free. And जो भी आपकी queries है, आप जैसे comfortable है, आप please उनको put on कर सकते हैं one by one. So, shall I start with the introduction, sir? Like what HPSSC is? Please, Shivani ji. Thank you. Okay, thank you so much, sir. So, firstly, if I start, HPSSC, it's the organization, okay, basically, जो कि हमारी state में HP, हिमाचल प्रदेश Staff Selection Commission, जो basically work करता है कि जो आपके exams है बेटा, like whether it's a GOAIT, whether it's for any police personnel, whether it's for paramedical staff, nursing staff, and many other like horticulture or various other डिपार्टमेंट्स जो हिमाचल में हैं उन सभी के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया है. सो पीरियोडिकली व्हाट दे डू इज ये एक नोटिफिकेशन आउट करते हैं, ईयर वाइज करते हैं, 2 year वाइज अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सनल्स इन एवरी सेक्टर, वेदर इट्स हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, whether it's agriculture sector. So जब आप health and family welfare के साथ लिंक रखते बेटा, तो they will give you a specific post like requirement की basis पे. Now we all know कि हिमाचल में various आपके medical colleges हैं, okay, and with medical colleges they are providing hospital facility. So HPSSC nursing officer जो nomenclature है उसके लिए पोस्ट्स को जो है आउट करता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टाफ इन द हॉस्पिटल्स. ओके, सो उसके लिए एक एग्जाम सेट करना. ओके, सो दे हायर द लाइक जो क्वेश्चन पेपर सेटर्स है एंड अकॉर्डिंगली दे विल गिव यू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन. सो HPSSC का ये क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना है. लाइक देयर इज सेट, विल डिस्कस इन डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, व्हाट इज द वे ऑफ फिलिंग द फॉर्म. सो जस्ट अभी आपने ये रखना कि HPSSC इज द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करने के लिए जस्ट इन द हिमाचल जो आपकी स्टेट है. ओके, now if we talk about ki HPSSC holds a link with DHS. Now what is this DHS? It's the Directorate of Health Services and is located at Shimla. Okay, now Directorate of Health Services आपकी जो एग्जाम क्वालिफायर्स है उनकी लिस्ट की बेसिस पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. So the first organization is HPSSC with its headquarters at district Hamirpur, Himachal Pradesh. It will be conducting in 3 phases. Okay, one is phase 1, that is written examination, in which we have objective type questions. Okay, so this objective type questions का जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसके पैटर्न पे अगर मैं ब्रीफ करूं आप सभी को, so it consists of 170 questions and that are to be completed in 2 hours time period. So when you complete it in 2 hours time period, each question it carries for 0.5 marks without negative marking. Okay, let me make it clear once again, there is no negative marking, and those 170 questions, okay, they are further categorized. Quickly if I brief, is like 100 questions will be minimum from your nursing profession side. Okay, and the rest 70 comprises of all your GK, that is from Himachal and all over India, and it includes brief English like pronoun, proverbs, idioms. Okay, and sometimes it's including Hindi also, like they'll give you sandhi viched karo, okay, या फिर मुहावरे. Okay, so they keep a mixed combination जो 70 marks है. Also in those 70 questions आपकी reasoning भी रहते हैं. Okay, so the main, if I say, the portion or the weightage is for your nursing part. Around 100 questions out of 170 questions weighs for your nursing part. So if you have a good control
over the basic concept of nursing, I think the phase 1 of the written objective examination is of ease for everyone. Then comes your phase 2, that is also being conducted by HPSSC organization. Now what comes in the phase 2 is उसमें आपका आता है skill test, typing test. Mostly I'll exclude this phase 2 in the nursing examination. Why? Because आपकी स्किल लाइक टाइपिंग टेस्ट मोस्टली जो आपकी अदर सेक्टर्स है लाइक जे IT उस पे टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है. सो उनमें आपकी स्किल टेस्ट या जो फेज 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बट इन नर्सिंग वी हैव फेज 1 एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द फेज 3. So in the phase 3, we will have the document verification. Once the written examination of the candidate is cleared, and they'll make a list, merit list, depending on the categories, okay? Like every category has achieved this highest score. Accordingly, they'll create one merit list, and according to that merit list, they'll call the candidates for the document verification. Now, as I said that 170 questions are included in the phase 1, each carrying 0.5 marks. So the paper accounts for 85 marks. Rest 15 marks are included in the phase 3. It's just for the nursing test I'm telling, okay? If we have some other kind of exam like skill typing test and all, then the weightage is divided to make 100. But in nursing, हमारे पास 85 marks जो है वो आपके written की होगी, rest 15 आपकी document verification होंगी. आपकी verification में it includes like 15 marks का एक आपका अलग से structure बनाया है. So उसमें आपका आता है like you are a single girl child or you already are working in any government organization at Himachal जो आपकी state है. Then apart from that, if any handicap quota is there and so on, we have a 15 points. Any landlord certificate if you can produce, any child who belongs to any IRDP holding card, okay? So accordingly in this document we have 15 marks. Apart from this, आपकी जो percentage है उसका भी aggregate दे take into consideration. Like 2 marks जो है वो आपकी percentage के देते. So if I find that 15 marks evaluation जो criteria है, okay, how it is subdivided, I'll definitely share in this group कि how this 15 marks are divided, okay? So just here you got a rough idea what HPSSC is doing, okay? They are conducting the examination in these 3 phases. But now I would like to specify here a change is there. Written objective exam is the only kept criteria, okay? They said that document verification should be handed over to the another organization like DHS. If we talk about that, I said Directorate of Health Services with its headquarters at Shimla. Now they are saying that there is duplication of work. We are doing document verification at HPSSC board Hamirpur, then same we are carrying at DHS Shimla. So why not we keep it at one place? Okay, and that is, I guess, it's more easier for the candidate. Okay, again and again they're carrying their documents, and again and again verification is happening. So now what they say, instead of 85 marks, complete 100 marks we will keep for the written examination. So now these documents will be directly verified at DHS. So now here जो candidate है उनको और ज़्यादा opportunity मिल गई है कि now they don't have to just grab the marks from 85 total. They can grab it from full 100 marks. Okay, so now the questions would be, I guess, around, if we talk about 170, we are stating in the earlier pattern, the questions level will also increase. So around nursing की अगर हम बात कर रहे थे कि 100 question है, अगर हम नए pattern में बात करें आराम से 130 question is again the weightage, अगर हम rough idea लेते हैं. Okay, so again it is of a great advantage कि आप easily exam को fight कर सकते हैं. Okay, now the second organization I talked was DHS. Now DHS will do the verification and they have a scrutiny cell. Okay, so when my scrutiny of the document was going on there, so the members of that scrutiny cell, they have the list कि candidate को हमें
कौन सा स्टेशन देना है. So the station that is been allotted, it depends on the requirement received at the Directorate of Health Services. Okay, कि वहां पे किस हॉस्पिटल में आपके नर्सिंग पर्सनल स्टाफ की शॉर्टेज है, कितनी रेशियो में जो है हम पेशेंट केयर को एडिक्वेट क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दे हैव अ लिस्ट. सो दैट लिस्ट इज हैंडेड ओवर टू द स्क्रूटिनी मेंबर्स एंड अकॉर्डिंगली वो हर एक कैंडिडेट को स्टेशन अलॉट करते हैं. So this is the procedure, and after the allottation of a particular station, okay, so the first station like I was allotted was Civil Hospital Thiog. Again, it lies in the district Shimla area. So there were other candidates in my postcode, if I talk about, like we were around 28 candidates who had cleared this HPSSC examination. So few were given even Chamba Medical College, few were given even IGMC. So it is not specific that this candidate is to be given this, depending on the requirement. If we have 28, so 2, 2, 3, 3 are been divided equally into every hospital where there was a shortage of personals. Okay, so this is how the process begins. Now, like आप सभी को रफ आइडिया है, here I would start कि now आपके कहाँ पे किस particular area में doubt है, query है, you just kindly feel free to question and I would be happy to take it. पूछिए जो भी पूछना है आप लोगों को, या शिवानी जी ने जो आपको बताया पूरा प्रोसेस क्लियर है क्या आपको? अभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी पूछना है. हाँ कविता, आप पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आफ्टर बैचलर हम एग्जाम दे सकते हैं या फिर हमें कुछ और भी करना पड़ेगा आगे, मतलब कोई एक्सपीरियंस? Okay, Kavita, here I would clear it. Yes, आप बैचलर्स के बाद एग्जाम दे सकते हैं. जस्ट द सिंपल प्रोसेस इज कि व्हेन यू कंप्लीटिंग योर बैचलर्स, बेटा आपको HPNRC, हिमाचल प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एट संजौली, वहां पे पहले रजिस्टर होना है. सो वो आपको एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे. काउंसिल इज लाइक एक टाइप ऑफ, लाइक हम बोलते हैं ना कि हमें ड्राइव करने के लाइसेंसर चाहिए, सेम वे बेटा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ओवर द पेशेंट्स. ओके, सो वी नीड अ लाइसेंसर एंड दैट काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव अस द लाइसेंसर फॉर आवर प्रैक्टिस. ओके, सो जब आप उस काउंसिल में रजिस्टर हो जाते हैं, आफ्टर दैट आपने ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है. ओके, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है HPSSC की, वहां पे आप फॉर्म फिल करेंगे. सो व्हेन द पेज गेट्स ओपन इन द HPSSC काउंसिल, आपने लॉगिन किया, आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया. आफ्टर दैट एक पेज ओपन होगा, वहां पे आपसे आपकी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी पर्सनल डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है. देन बिलो दैट कम्स योर रजिस्ट्रेशन नंबर कि यस हम एक पर्टिकुलर काउंसिल में रजिस्टर्ड है. ओके, आफ्टर दैट आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए. थैंक यू मैम. ओके, पारुल, शीतल, दिव्या, आपको क्लियर है? पूछ लीजिए जो भी पूछना है, हिचकिचाइए मत. मैम एक क्वेश्चन और है आपसे कि लाइक आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, मतलब आप कितना टाइम स्टडी को देते थे, मतलब आपने कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, लाइक अगर आप Okay. बताना चाहें. Sure, I'll take this, beta. See, time is first thing. It's every individual's sitting capacity. Okay, so I would suggest कि preparation के लिए one is the sitting capacity. आपको लगता है कि okay, you can give 1 hour to the subject, give it honestly. Okay, because it is something that will repay you. Okay, but if you're thinking no, I have to sit 3 hours but the concentration is not there, then it will not work out. Means those 3 hours if you're sitting, it must be productive. In brief, if I would suggest rest, the thing is take a syllabus.
ओके, कि HPSSC ने जो एग्जाम आपका प्रिपेयर करना है उसमें आपकी वेटेज कैसे दी है. सो एज आई सजेस्टेड कि आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है दैट इज फ्रॉम द नर्सिंग बैकग्राउंड. सो आपका बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर. ओके, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कैसे होता है बेटा, कि आपके पास, हमें पता है नर्सिंग में वी हैव 5 स्पेशलिटीज. वन इज द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वन इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, वन इज साइकेट्रिक नर्सिंग, वन इज ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग. ओके, एंड वन इज दी साइकेट्रिक नर्सिंग. सो फर्स्टली जब वो एग्जामिनेशन को सेट करता है दे विल टेक ऑल द स्पेशलिटीज, मोस्टली जो 5 इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आपको पता है वी हैव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, वी हैव नर्सिंग फाउंडेशन 1, नर्सिंग फाउंडेशन 2. अभी तो आपको पता है INC ने थोड़ा सा सिलेबस को चेंज किया है. देन वी हैव साइकेट्रिक नर्सिंग 1 एंड 2. ओके, सो आपके जो सब्जेक्ट्स है उन्हीं से ही पेपर सेट होना है. सो बेसिक कंसेप्ट इज टू बी क्लियर. आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप सेकंड ईयर में हैं, आप थर्ड ईयर में, आप फोर्थ ईयर में, देन यू कम टू इंटर्नशिप. इंटर्नशिप इज समथिंग जहाँ पे आपका सम अप हो रहा है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आपने स्टडी किए हैं फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक इन द बैचलरेट प्रोग्राम. ओके, सो उसका निचोड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका बेस क्लियर है डेफिनेटली आपको बहुत इजी लगेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट we also have other questions from the fields like जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस. ओके, सो उसके लिए आप जो है देयर आर मेनी बुक्स ओके जिनसे आपको कंफर्टेबल फील होता है या आपको लगता है कि यस आई कैन गो थ्रू दिस बुक. देयर आर सम बुक्स दैट आर टिपिकली इन हिंदी, देयर आर सम बुक्स दैट आर इन इंग्लिश. इफ आई टॉक अबाउट लाइक you might have heard सामान्य ज्ञान, it's in Hindi. It holds the GK that mostly covers the general knowledge of Himachal in the ancient period, medieval period, okay, and so on. Same way we have history of Himachal Pradesh. Okay, I guess it's Rana Publications, that book, or even Arihant Publications are having these GK books. तो जो आपको लगता है कि यस एक पूरे जोग्राफिकल एरिया को हिमाचल के कवर अप कर रहा है, दीज आर द बुक्स दैट आई रेफर्ड. आप वो ले सकते हैं, नॉट ओनली जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू वन पर्टिकुलर बुक. ओके, आपको मेनी पेजेस जो है आप देखेंगे. ओके, like if I talk about their mission high, some group is there on YouTube. Okay, they are giving the videos on the nursing competitive exams. Okay, so frequently you can use not only that YouTube page, other also YouTube videos you can see. Means you should have the resources that are in a wide range, just not restricted to the books. Okay, you should use the technology also, I would suggest. Okay, you can see a YouTube video, you can use the books. Then for general awareness we have general studies for exam pages there. Okay, that usually helps the candidates or aspirants to prepare for UPSC. So UPSC is a very high level exam. Okay, so from there you can grab a knowledge from all over India जो आपकी recent चीजें हो रही है. Okay, current affairs की information आपको वहां से मिल सकती है. Okay, then there are many, I guess, small newsletters are coming. Okay, they keeps on every month updating about the current affairs of the country. So that way you can prepare for the जो weightage कम part है, but more is your nursing. So nursing books, I guess everyone has from first year till fourth year. If you just go through with that books and keep a concept clear, then it would be easy for you to qualify this exam. थैंक यू शिवानी जी. और प्रश्न पूछिए. मुझे एक पूछना था क्योंकि आपने मुझे पहले बताया था कि आपने MSc नर्सिंग करी, उसके बाद आपने ये एग्जाम दिया. तो अगर मुझे करना है और इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं क्या? पहला तो ये था, मैं HPSSC में कर सकते हैं. तो मुझे अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा कि BSc के बाद दे दें या MSc के बाद दे दें? कोई फर्क पड़ता है? I think sir after BSc it's much better. आफ्टर BSc. हाँ जी. आई थिंक ये सभी लोग BSc के बाद ही करना चाहते हैं.
it is a much better option to all the students who have joined. See, the basic clear thing, अगर मैं ये कहूँ बेटा कि already 6 to 7 lakhs is the basic expenditure in BSc nursing program. Okay, so if you're doing that and you are good at fighting and qualifying a exam, okay, आप regular हो जाते हैं 2 years के जो tenure की आपकी service है उसके बाद, and you get a salary, and yes, the government जो आपको है later on in service education program के लिए opportunity दे रही है, then why not go for the masters with that kind of opportunity? Okay, so I think that is a good option. Okay. तो आपका रिकमेंडेशन ये रहेगा बीएससी के बाद ही ट्राई करें. थैंक यू. Yes sir. अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये जूम कॉल रिमेनिंग मीटिंग टाइम 6 मिनट दिखा रहा है. इट वाज शेड्यूल्ड बाय आश्रम. आई रिक्वेस्टेड देम हाउ टू एक्सटेंड इट. अगर बाई चांस अगर ये कॉल कट होता है तो मैं एक व्हाट्सएप कॉल कर लूंगा उसके बाद. ठीक है, अपने पास Sure, sir. प्रेजेंटेशन तो है नहीं. ठीक है, पारुल, दिव्या, कविता, शीतल, शिवानी, व्हाट्सएप पे आप अटेंड कर लेंगे ना 5 मिनट बाद अगर कॉल एंड होता है? बोलिए कुछ. आप लोग तो सब म्यूट करके बैठ गए. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. कविता, यू आर फाइन? यस सर. ओके, पारुल जवाब दे दीजिए बस कि हाँ व्हाट्सएप कॉल चलेगा. शीतल, दिव्या? ओके, Yes, sir. एक्सलेंट. हाँ, अनम्यूट करिए, जरा बात करिए. पारुल, आपको भी चलेगा व्हाट्सएप कॉल 5 मिनट बाद अगर ये कॉल एंड हो जाता है? Yes, sir. वेरी गुड. और पूछिए जो भी है. क्लॉक इज टिकिंग. सो शिवानी जी आपको टाइम दे रही है. आप प्रश्न पूछिए, खुलकर पूछिए जो भी है. जैसे पूछा कविता ने ना, प्रिपरेशन के लिए आपको और क्या करना चाहिए, वो तो जरूरी है ना जानना. सो शिवानी जी, ये लोग सोचते हैं जब तक आइडियली, मतलब इन आइडियल थिंग, और मैं ये 5 से बात कर चुके हैं हम पहले. इनका ऐसा है कि अभी हम बीएससी नर्सिंग पे फोकस करेंगे. हमको अभी टाइम नहीं है प्रिपेयर करने का, जो मैं समझ सकता हूँ. तो प्रिपरेशन के लिए जैसा आपने बताया कि सिटिंग टाइम आप कितना दे सकते हैं उस पर ही ऑफकोर्स डिपेंडेंट है, आप कितना डेडिकेटेड है, कितना डिसिप्लिन है. लेकिन एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए कितना समय आपके हिसाब से सही रहेगा? Sir, I think if now they are continuing and pursuing the program, okay, abhi complete nahi hua hai, they also might think ki we have time needed for our research process. Okay, then they need कि अब तो examination है, हम examination में भी well perform करना है. So accordingly, अगर apart from this schedule, ओके जो डेली ये फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा जस्ट 2 hours डेली, 1 in the morning, 1 in the evening, if they are giving, that is more than sufficient. Thank you. Because And, see, the thing is, they are already prepared with the subjects they are currently reading. They need to focus on what they did in the previous years. So 1 hour is sufficient. Okay. और आपने शायद कोई टेक्स्ट बुक है जो जैसे मॉक टेस्ट है या प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस पब्लिश होते हैं क्या इसमें? So there are many more. Okay, so like I would say that Saunders NCLEX examination book, I feel is consisting of each and every detail of every concept. Okay, so that book would be better. उसमें But yes, मॉक टेस्ट भी है. सॉरी आई इंटरप्टेड यू. उसमें मॉक टेस्ट भी है? yes, it's available. But I think for a starter, this book may be like, you know, what we are reading. So from the basic, if they start, I would suggest a Target High book is there, and it comprises of previous years question papers. So a pattern is clear in the mind of the candidate, okay, who are aspiring for the exam, so that they can practice. The mock test or previous year question papers are year wise enclosed in that at the end of the book. मैं आपसे चैट पे पूछ लूंगा जो बुक्स का नाम है बाद में, तो व्हाट्सएप पे तो शेयर कर लेंगे फिर इन सब से. अच्छा, 1 मिनट बचा है इस कॉल में, और
आप पांचों बताइए, आपके पास प्रश्न है, नहीं तो व्हाट्सएप कॉल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या शिवानी जी, आपको और कुछ बताना है इसके अलावा? I guess, sir, I think quickly those FAQs we can take, those 10 to 15 enlisted in the WhatsApp, quickly we can take one by one. And I guess most of the thing that I think need to be known by the students are already included in those FAQs. So quickly one by one we can take that. ओके, वो व्हाट्सएप कॉल पे ले लेंगे फिर अपन, क्योंकि ये मेरे को दिखा रहा है 1 मिनट 19 सेकंड बाकी है। No worries. No worries. महामाया जी, यू आर देयर, नो? ओके, पूछ लीजिए, अभी 1 मिनट और बाकी है। कोई प्रश्न पूछना, नहीं तो व्हाट्सएप कॉल पे फिर शिवानी जी बाकी जो बकरा है वो आपको वहां बता देंगे इमीडिएटली। इसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप कॉल करता हूँ, ग्रुप कॉल करूंगा। मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि आफ्टर बीएससी हम ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं? हाँ जी, definitely you can take a coaching. See, coaching में the advantage is, बच्चे, I guess Divya is asking the question. यस Yes, ma'am. So yeah, I think coaching is a okay, good option, but to the students who cannot afford coaching, for them the concepts are to be cleared by themselves. But the most advantage of coaching, whether you take online or offline, is the things are properly scheduled.